With only 66 vacancies for this year RBI Grade B 2024 exam, as we know that dates are also clear, we are having less than 40 days in our hand for phase 1 preparation and less than 80 days in our hand for phase 2 preparation. Many of the students are worried about vacancies, and most of these students may not be as serious as they think. And rest of the students who are actually diligent and determined, they are worried about more authentic problems. So we have to find right problems in our journey in RBI Grade B exam. The real problem is not about vacancies being less. The real problem is in this 80 days, what should be your strategy considering vacancies have reduced? But what should be your strategy? Should you go for phase 1 and phase 2 exam togetherly? Should you go for only phase 1 exam because now that is also logical? I will tell you why. phase 1 exam आपकी elimination stage है. 1 लाख स्टूडेंट अगर phase 1 एग्जाम इस साल सपोज वैकेंसीज कम है तो शायद से 80,000 70,000 लोग एग्जाम दे. अगर ये 70-80,000 भी लोग एग्जाम दे रहे उसमें से 3% या 2% ही लोग फेज 2 के लिए चले जाएंगे. बाकी के 97-98% विल बी इलिमिनेटेड क्विकली फ्रॉम योर फेज 1 स्टेज ओनली. तो अब ये जो 3 to 2% यहां पर सिलेक्शन रेशो है फेज 1 एग्जाम का, दिस मेक्स दिस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेज ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इसको इलिमिनेशन स्टेज भी कहा जाता है. दैट इज वाई if you see logically, this time vacancies are also less, you are having a good amount of time with you. But if you are an student जिसको self assessment करके ये पता लग रहा है कि मैं इतना smart नहीं हूं, या फिर मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है कि मैं इस साल क्लियर कर सकता हूं कि नहीं, then it would be logical कि आप बस phase 1 के लिए प्रिपेयर करो, right? So what should be a student who is an average? Well, average student who is a mediocre, but he is performing his tasks on daily basis. थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, but for every such student the same doubts are there and same under confidence is there. So considering all the vacancies, let us now see how we can strategize, how we can go for RBI Grade B exam 2024, and the main question, should we focus on phase 1 or should we focus on phase 2? To answer this, we have to first understand that phase 1 examination and the overall sections of the phase 1 examination. Sorry. Once you look at this phase 1 examination, you will understand the important sections. From these important sections, we all know general awareness, English, your scoring sections and important sections, and your reasoning and quant being the sections which are difficult, but here we have to only clear the cutoffs for each of these sections. Now, once you understand the phase 1 examination, the most difficult part where it will come, if vacancies are less, it means that the difficulty would be pretty much like skyrocketing. So when we are looking at the difficulty for general awareness, expect that complicated questions may be asked. Whatever current affairs which is related to PIB, finance, current affairs, here you can expect that even minute details will be asked in this general awareness section. In reasoning and in quant, what are the things to observe here? Here when you are looking at reasoning and quant sections, make sure that you go through all the complicated questions also, practice as much as you can. Whatever types of individual topics are there, simplification, suppose 6 types are there, practice all the 6 types. Do not leave any of the stone unturned in this quant and reasoning, because anything may come up, and as you can expect, phase 1 will be more difficult than phase 2. This is a guarantee. Now, strategy for phase 1 definitely will come separately. When we consider phase 2, it's not that phase 2 easy रहेगा, phase 2 भी उतना ही difficult रहेगा. But considering that here also current affairs, that is ESI current affairs, finance current affairs, and descriptive part of finance ESI management, along with English descriptive is there, here little bit room is there for practice. तो यहाँ पर जो हार्डवर्क करेगा और प्रैक्टिस करेगा, डेफिनेटली फेज 2 भी उसके लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. पहले तो कि मुझे बस फेज 1 के लिए प्रिपेयर करके फेज 1 क्लियर करके बाद में फेज 2 के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर मुझे इंटीग्रेटेडली, आई वांट टू प्रिपेयर इंटीग्रेटेडली फॉर फेज 1 एंड फेज 2 टुगेदर, दैट यू कैन डिसाइड ओनली इफ यू आर डूइंग सेल्फ असेसमेंट. हाउ टू डू दैट असेसमेंट? सिंपल. फर्स्ट, ask yourself, are you a student who is very strong in quant, reasoning and English and you are having a good amount of confidence? उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे. पहला क्वेश्चन यही पूछो, क्यूआरई में स्ट्रांग हो या नहीं. अगर आप क्यूआरई में स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो,
तो अब मैं आपको आगे स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको करना क्या है। आपके फेज 1 के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए 20 दिन बचे हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद और फेज 1 तक 20 दिन बचे हैं, एंड फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2 40 दिन बचे। तो इन टोटल 80 डेज, फॉर फेज 1 कंबाइंड 40 डेज, registration time 20 days, and after registration till phase 1 20 days. So we will try to break down your overall preparation strategy into 3 parts, 1 2 3. The first 20 days of preparation should be totally oriented with a combination of phase 1 and phase 2 subjects, such as, simple बात है, phase 1 के लिए prepare कर रहे हो, quant reasoning English हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और हमें confidence भी है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अल्टरनेटिवली दिन में 1 घंटे पढ़ाई करनी है, डू प्रैक्टिस ऑफ 1 hour ओनली ऑफ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। करंट अफेयर्स गिव 1.5 hour. नाउ इन करंट अफेयर्स यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, हैव यू डन द बैकलॉग्स ऑफ करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन मंथ्स? 6 to 8 months of current affairs is covered or not? And if not, then you have to dedicate extra time for current affairs, considering that current affairs comes in phase 1 also and phase 2 also. So 1.5 hour, that is 1 hour for QRE, 1.5 hour for GA, and 1 hour for your static subject. It may be finance, it may be management, it may be ESI. Consider coverage as well as short note making also in this particular time. This should be for your first 20 days. Your next 20 days, that is after registration, should be concentrated more on your phase 1 and also on mock tests which are related to phase 1. क्योंकि registration के बाद 20 दिन आपके, उसके बाद immediately 8 सितंबर को फेज 1। तो इन आफ्टर रजिस्ट्रेशन व्हाटएवर 20 डेज रिमेन, तब स्टैटिक, ईएसआई, फाइनेंस, मैनेजमेंट, स्टैटिक, इसको भूल जाना है, ठीक है। एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग क्यूआरई डेली प्रैक्टिस, जीए का रिवीजन विच इज फॉर 2 hours, and 1 hour you have to give mock test and you have to analyze it very well. This is what you have to do for your after registration 20 days till your phase 1 exam. In last week of your phase 1 exam, आप exhaustively full length mock test दे सकते हो। Now after phase 1 exam, here 40 days are there till your phase 2. क्या करना है? हम GA कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना है। क्यूआरई का जो 1 घंटा था वो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए देना है, ठीक है। एंड यू हैव टू डू 1 hour अगेन स्टैटिक पार्ट रिवीजन। तो इस तरह से डिस्क्रिप्टिव भी हो रहा है, करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है, एंड स्टैटिक पार्ट का डिस्क्रिप्टिव भी हो रहा है। So in this way everything would be covered. This is a strategy for a student जो कि QRE में बहुत confident है, and that's how he should follow his phase 1 and phase 2 preparation integrated but in a different way. Let's take a case 2. अब हम बात करेंगे केस दूसरा, ठीक है। The second case is about the person who is weak in QRE. आप QRE में weak हो। The pattern remains same. 20 days before the registration, 20 days after registration till your phase 1, and then after phase 1 40 days till your phase 2. Now as you are weak in QRE, make sure आप QRE को 1 घंटा एक्स्ट्रा दोगे। इसका मतलब ऑन डेली बेसिस जीए के लिए 1 hour दोगे, QRE अल्टरनेटली आप 2 hours दोगे। तो जो QRE में कॉन्फिडेंट था उसको 1 घंटा इनफ है, लेकिन जो वीक है उसने 1 घंटा एक्स्ट्रा देना चाहिए ताकि रिस्क ना हो, okay? And static part again you have to give 1 hour for first 20 days. After registration 20 days till your phase 1 exam, static part को हटा देना है। करंट अफेयर्स को आप क्या करोगे? 1 घंटा दोगे फॉर रिवीजन एज वेल एज फॉर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। क्यूआरई के लिए आप 2 घंटे दोगे और क्यूआरई के सेपरेट मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे एज यू आर ऑलरेडी वीक इन क्यूआरई। लास्ट वीक ऑफ क्यूआरई यू विल try to solve as much as QRE test as possible. The intention here should not be just scores but also about conceptual clarity and are you able to solve the questions within time. पहले जब आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब टाइम लगा के नहीं करना है। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है या फिर आपका टोटल एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, then only you have to go for time wise mock test. Remaining 40 days, that is after phase 1 exam 40 days का प्लान क्या है? That remains same for both of the candidates. 1 घंटा आप जीए रिवीजन कर लो, करंट अफेयर्स रिवीजन, ईएसआई स्टैटिक, ईएसआई करंट अफेयर्स रिवीजन, फाइनेंस करंट अफेयर्स रिवीजन।
1 घंटा आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए दे दो, which is half hour descriptive answer writing for ESI finance management, half hour for English. ठीक है, and 1.5 hour for again mock test and 1 hour for your static ESI finance and management. ठीक है, this is very very important and this is how one should prepare for phase 1 as well as phase 2 integratedly, but in a different way as he is weak in quant, reasoning and English. If I tell you कि overall breakup कैसा रहेगा, then in this last 50 days this could be one of the methods. This is a sample of just a student. If you see reasoning कर रहा है वो, ठीक है, यहाँ पर मैंने number of hours दिए नहीं है, because as I told you there are two cases. One is the student who is QRE confident, second is the student who is QRE weak, but the overall timetable remains same guys. ठीक है, last week के लिए mock test रखे, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हो एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. सो थैंक यू वेरी मच. एंड दिस अप्रोच इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही करना, फर्स्ट 20 days, then after registration 20 days, and then next 40 days. These are the 3 phases for preparation and how you can integratedly prepare for phase 1 and phase 2 selectively. Okay, so thank you very much. See you next time.